Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this session, we will review your quiz and assignments first, and then we will move on towards our today's topic. So first we review the quiz. There are 9 attempts. There should be 10 attempts. One student is still missing. So as you can see, Mustafa get 10 marks. Faisal get 7.5, 75%, not bad. Similarly, Dilawar gets 7.5, Sumaya get 10, Aisha gets 7.5, Nadia Sayed gets 7.5, Nadeem get 10, and similarly Nasser and Hina get 10 and 10 marks. One student is missing. I guess Aruba. Aruba says that she's not home for 1 to 2 days, and when she return, then she will take the exam. जी फैसल, क्या हाल है? आप ठीक है, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। वालेकुम अस्सलाम। नमाज अजान के बाद स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। कितने बजे तक आ जाए सर? फिर यही तकरीबन अजान 5 मिनट में हो जाती है, 2 मिनट में हो जाती है बल्कि। अच्छा, ठीक है, सही है।
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, welcome back. Welcome, students. In this session, we are primarily learning the new topic. We are starting a new topic. So, let me share the screen. So, in this session, we are starting our next chapter, which is chapter 4. And chapter 4 is related with the combinational logic circuits. So until now, we have studied the basics. Now we are moving towards the actual primarily topic. So there are two topics. Before I start, if there are any question related to our last class, okay, and last session, बेटा आप लोगों ने assignments अपनी complete कर ली है? जी सर, वो आपको भेज दी थी शायद। नहीं भेजनी नहीं थी उस पे LMS पे। यस सर, कर दिया। LMS पे अपलोड की थी मतलब। बेहतरीन हो गया। तो अरूबा आपका बेटा वो रहता है अभी क्विज 2 रहता है, तो आप किसी भी टाइम कोशिश करें एक वीक में क्विज 2 जरूर कर लें, ठीक है? सिर्फ आप ही का रहता है। यस सर, मैं अभी कल या परसों में अटेम्प्ट कर लूँगी इंशाल्लाह ताला। कोशिश कीजिए एज सुन एज पॉसिबल कर लें ताकि ये कंप्लीट हो जाएगा। और मिड टर्म का आपको मालूम होगा कि जनवरी में इंशाल्लाह प्लान कर लें इस फर्स्ट वीक में। तो जो भी उसका शेड्यूल बनेगा या जो भी डिसीजन होगा वो इंशाल्लाह मिल जाएगा। अभी तक सिर्फ यही मालूम हुआ है कि जनवरी के पहले वीक में प्लान कर रहे हैं, ठीक है? तो इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। Now moving back towards this course, if there is any question, एक्सक्यूज मी सर, बेटा बोलिए अरूबा। जी बोले अरूबा, आपकी आवाज़ नहीं आ सर मैं ये पूछ रही थी कि असाइनमेंट LMS पे अपलोड किया हुआ है आपने? रही। बेटा LMS पे ठीक है अटेम्प्ट सर। किया था ना, क्विज 1 अटेम्प्ट किया था ना, अब आप क्विज 2 भी अटेम्प्ट करेंगे और असाइनमेंट भी वही है। ओके, देयर इज एनी अदर क्वेश्चन? नासिर, आपके ज़हन में कुछ क्वेश्चन है? मुस्तफ़ा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा? नो सर। तहरीम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नो सर। ओके दिलावर बेटा, जो अभी मौजूद नहीं है आप एक अपने प्राइवेट ग्रुप में मैसेज कर दें ताकि वो भी आ जाए क्लास में। हमारे पास जो है 4 है। ओके सर। So we start formally. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. In this session, we start primarily working on the digital logic. So there are two questions which we should primarily understand. One is related with the analysis.
So in analysis, you start with a circuit. So a digital circuit is given. A digital circuit is given. And from that digital circuit, you primarily build a Boolean expression and simplify it, a Boolean expression. That's a Boolean function. Okay. So, and then there is another topic, another question, which is called design. Okay, design, you really start with a problem description. So a description is given. Let's say it is a problem. A problem description is given. And through process, you make a circuit. And there are specific procedure how we accomplish this. So today we will be briefly through these two aspects, and inshallah in next week we will be going through the complete examples. So moving the analysis part first. There is also some theory because it is combinational logic. So it combines the inputs and generate the outputs. So combinational logic circuit do not have a memory element inside. इसके अंदर कोई memory element नहीं होता. So it is just a plain circuit जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं. उसमें it do not have an ability to store information. हम जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि there is a sequential circuit which is the extended form of combinational circuit. So any circuit which do not have a memory element storage capability is primarily a combinational circuit. जो अभी तक हम सर्किट पढ़ते आ रहे हैं, they are called the. So the analysis procedure, we go through this analysis procedure and then the example which is given in the. So a circuit is given and we are to find the Boolean function, okay, from a logic diagram. So diagram is given, the circuit is given, and we are to find the Boolean function. And Boolean function can be expressed in a number of ways. For example, a truth table. For example, a simplified form. For example, in a sum of product form. Okay. So three things constitute a Boolean function. An algebraic expression, a truth table, which is a graphical representation, and similarly a sum of product form. लिख देता हूँ साइड में. Okay, so Boolean function in sum of product form, जिसमें सम लिखते हैं और आगे जो है वो ब्रैकेट में जो है वो 1 2 3 जो भी लिखते हैं. Then we have a truth table, and we have a simplified
expression, okay, simplified expression with the minimum number of literals. हम पढ़ के आ रहे हैं सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह. Okay, moving ahead, the first step is label all gate outputs. Gate क्या है? AND gate, OR gate, NOT gate, and exclusive OR gates. These are the gates. So that are function of input variables with arbitrary symbols but with meaningful names. Determine the Boolean function for each gate output. ये अभी हम करेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा. Okay, label the gates that are function of input variables and previously labeled gates with other arbitrary symbols. जैसे जैसे गेट आते जाएंगे उनको हम नंबर करते जाएंगे और उनका बूलियन फंक्शन जो है वो फाइंड करते जाएंगे और इसी स्टेप को हम रिपीट करते रहेंगे. ये जो स्टेप 2 है इसी के अंदर हम चलते रहेंगे जब तक कि हम एंड तक नहीं पहुंच जाते, आउटपुट तक नहीं पहुंच जाते. And then by repeating substitution of previously defined functions, obtain the output of the Boolean function. और इस तरीके से हम वापस ट्रेस करते हुए उसका एक्चुअल जो एक्सप्रेशन है वो मालूम कर लेंगे. लेट्स सी कि जो एग्जांपल दी हुई है उसमें कैसे ये किया गया है. Okay, this is the circuit which is given. And in first step, they label the input as A, 3 inputs. So A, B, and C. These are the labeling of the inputs. Similarly, the same inputs A, B, and C. Often the inputs are given. Okay. So A, B, C, these labels are given, already given. Okay. F1, F2. So these T3, F2, T1, T2. Then our task is to find how we can represent this T2. Okay, मेरा सवाल आप लोगों से है इससे पहले कि मैं इसको एक को मैं करके दिखाता हूँ. Then T2 will become is equal to, this is AND gate. So I write A, B, and C. This is the output of this gate, and I know this is AND gate. Okay, as a symbol of the AND. Then this I know this is the OR gate. When I write the output of this gate is A plus B. Remember, this is logical addition. Okay, plus B plus C. This is different from arithmetic addition. So now I have the expressions for T2, the expression for T1. Then I move towards T3, but to solve T3, I need to know this input as well. Okay, तो मैं इस इनपुट को भी हल कर लेता हूँ. थोड़ा डायग्राम को स्मॉल करना होगा ताकि इस पर फिट आ जाए. Okay, now I again write that this T2 is equal to A, B, and C, and this T1 is equal to A plus B and plus C. Similarly, I find A, B. This is primarily the output is A and B, and similarly the output of this AND gate is AC, and this output is B, C. And when I sum it, I can write here the output is AB plus AC plus BC. So this will be assigned to F2. Okay, so I am able to find F2 by just working on this circuit only. But when I go to the upper one, then I have to go through this NOT gate as well. So F2 complement will be the complement of this expression. So AB plus
AC plus BC, and I take the complement of this expression, and then I assign this expression to this y. Okay, so just I over here. Okay. Then I move forward toward T3. I know T3 is primarily an AND gate, so I have to AND this function with this function. Okay, so then T3 will become is equal to A plus B plus C and multiplied with AB plus AC plus BC and then the complement. Okay, so this is the expression which is related with T3. Then finally F1. F1 then add A, B, C with the A plus B plus C and similarly. So I can write initially F1 as T2 plus T3. Then according to the step number 4, I place the values, the algebraic expression of T2 here. So T2 is A, B, C, and then plus the expression which is for T3, which is A, B, C, and multiplied with AB plus AC plus BC complement. So this is how I find, this is the analysis procedure. Okay. So this is how the analysis procedure works. And then I can write the whole thing in the form of a truth table. And that truth table primarily outline the input and the output. Okay. So on the input, I have A, B, and C. And on the output, I have F1 and F2. So I write all the combination here 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, oh, sorry, 1, 0, 1, then 1, 1, 0, then 1, 1, 1. Okay. So these are all the combinations of A, B, and C. These are the inputs. Then I go put these values A, B, C to find the function F1. So if I write A0, similarly B0, I get 0 here. Then I put the values of 0, 0, 1 in this expression because this expression is with F2. So A is 0, both terms are 0 and B is also 0. So I write 0 here. Then I move towards 0, 1, 0. No, though two terms are 0, only B is 1. Okay. So again 0. Then I have A is 0, BC is 1, 1. Okay. So A is 0, this term becomes 0. A is 0, this term. BC is 1, 1. So this term will be 1. So I go on, and similarly I write and fill the information with this table for F2 with 0, 0, 0. All things are 0, 0, 0. So this is also 0. So this whatever is 0, I get 0.
So similarly, I fulfill this truth table and my task of analysis is over, complete, finished at this point in time. But I can go ahead as well. I can use a 3-variable map. I draw a 3-variable map and then I can actually simplify the function to get what is primarily ABC actually is in a simplified form. And I put the values here according to the minterms, and then I have a simplified expression for F1 and F2. So this is how the whole procedure of analysis goes on. So if there is any question at this point in time, dear students, if there is any question, सर ये मैंने क्वेश्चन पूछना था कि जो हमारी एनालिसिस है उसके अंदर लास्ट स्टेप हमारा मैप मेथड होगा, मतलब लास्ट में हमने मैप बनाना होगा। देखो आपके पास सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जैसे ये सर्किट है, then you have to find a simplified expression. So to find simplified expression mechanisms, यानी तरीके हैं मुख्तलिफ. One method is to solve through algebraic manipulation. कैसे आप इसको मल्टीप्लाई कर दें और इस डिमॉर्गन लॉ लगा के पहले इस कॉम्प्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करें, वो एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देगा, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर देगा, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे. आफ्टर दैट सिंप्लीफिकेशन वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी. सेकंड मेथड ऑफ सिंप्लीफिकेशन इज टू गो थ्रू द मैप मेथड. फॉर मैप मेथड यू हैव टू ड्रॉ द ट्रूथ टेबल फॉर मिनटर्म्स. ठीक है ना? तो आई सजेस्ट you go to the map method, okay, by using this truth table and then go on, because Okay, sir. sometimes it become very complex. जो सवालात दिए जाते हैं वो इतने डिफिकल्ट नहीं होते. तो दिलावर मेरे ख्याल से समझ में आ गया. Yes, sir. Okay, any Thank other you, sir. question? Thank you बेटा आपका भी. Any other question? So we find No, sir. that the F2 expression, similarly the F1 expression, as you can see, we find this expression primarily, and then the algebraic manipulation will lead us to the final answer for F1. Okay, but we can find the same answer by using the map method. Okay. So there is also some additional information. I am just skipping through the additional information and going towards the design process. Okay, because analysis process is very simple. It starts with a circuit and end with a Boolean expression, which is simplified. Okay. Note the design procedure, which is also an important procedure. We start with the problem description. Or from the truth table we start and finally make a circuit. Okay, so the first point is from the specification of the circuit, जो कि problem description है, determine the required number of inputs and outputs and assign a symbol to each. जैसे for example हमने ये सर्किट बनाना है और हमें पता चल गया कि इसकी 3 इनपुट्स हैं और इसकी 2 आउटपुट्स. ठीक है, तो हमने कहा कि इनपुट ए बी सी है और आउटपुट जो है वो F1 और F2. कोई एक्स वाई भी कह सकते हैं. तो इस तरीके से हमने जो, दिस इज द स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2, डिराइव द ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबल बना लीजिए. Then simplify.
सिंप्लीफाई बना लीजिए एक बुलियन एक्सप्रेशन और उससे फिर सर्किट ड्रा कर लीजिए। दैट्स इट, 4 स्टेप्स हैं। एक दफा दोबारा देख लीजिए। प्रॉब्लम डेफिनेशन से इनपुट और आउटपुट के सिंबल्स बना लीजिए, ABC असाइन कर लीजिए, F1 F2 असाइन कर लीजिए, ट्रूथ टेबल बनाइए, सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन निकालिए और उससे सर्किट बना लीजिए। अब हम देख लेते हैं, इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। Okay, this is the example in which the input is given and the output is given. So the step 1 is to label the input and the output, ठीक है, and then make the truth table. तो दो स्टेप तो हो चुके। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप ऑलरेडी कंप्लीटेड है। देखिए इसको प्रॉब्लम को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। वी हैव BCD कोड एंड वी हैव XS3 कोड। XS3 कोड क्या होता है कि बाइनरी में 3 ऐड कर दें तो XS3 कोड बन जाता है, और XS3 कोड जो है वो स्टार्ट होता है 3 से, 3 बेस 10, ओके, जिसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, ठीक है। सो द इनपुट BCD 0 0 0 0 and the output BCD is we add 3 to the binary and then we make this, okay. Similarly, BCD go from 0 to 9. Okay, binary coded decimal. So the rest of the numbers are unused because we know with 4 binary numbers we can represent up to 16. तो 15 तक जाएगा ये, लेकिन हम सिर्फ BCD में 0 से लेकर 9 तक लेते हैं। XS3 code is just add 3 to each number and we get the next number. So our task is to make a circuit which will do that. क्या BCD को convert कर दे XS3 code में, because some applications are using it. So the truth table is formulated. Labels are assigned. A assign कर दिया, B assign कर दिया inputs को, C assign कर दिया, ये inputs हैं, और इसी तरीके से W assign कर दिया, X असाइन कर दिया, Y और Z असाइन। अब हर एक के लिए अलग अलग सर्किट बनेगा, ओके। W के लिए अलग बनेगा, X के लिए अलग बनेगा, Z के लिए अलग बनेगा। नंबर 3 इज फाइंड द बुलियन एक्सप्रेशन, ओके। बुलियन एक्सप्रेशन फॉर W क्या है, X क्या है, Y क्या है, Z क्या है, ये मालूम करो। इट्स वेरी सिंपल, जो बिकॉज बट वी नीड 4 वेरिएबल मैप, ओके, रिमेंबर 4 वेरिएबल मैप। सो जहाँ जहाँ 1 होगा उसको हम 1 कर देंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे और वो हमारा सर्किट बन जाएगा। देखते हैं इसे कैसे करा है उसने। इट प्राइमरीली सॉल्व्ड इट। ओके, it make primarily for Z it make the map and then the don't care conditions, because what are the don't care conditions from 10 11 12 13 14 and 15. These min terms are don't care because they are not part of the प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं है। सो वी यूज डोंट केयर फॉर देम। तो आप देखिए डोंट केयर कहाँ कहाँ लग रहा है। डोंट केयर लग रहा है 10 पे, 11 पे, 12 13 14 और 15 पे। तो ये जो है ना, ये डोंट केयर है। आई डोंट केयर कंडीशंस विल हेल्प अस टू गेट ए सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। तो जब हम इसका वो बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, तो इस तरीके से 8 का एक ग्रुप बन जाएगा और इसको फिर हम सॉल्व कर लेंगे। वी ऑलरेडी गॉन थ्रू द सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस, सो वी गेट एन एक्सप्रेशन फॉर Z। तो Z के लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगी। सिमिलरली वी गेट ए एक्सप्रेशन फॉर Y and similarly we get an expression for X and W. So after that we get these expressions
Z is equal to D complement. So we have to just make in our circuit a NOT gate, and that NOT gate will be generating the output. Okay, so this is just a simple circuit for D complement. Z is the output and D is the input. So we make a NOT gate, and that NOT gate will generate Z is equal to D complement. Similarly, for Y, we have to make a circuit, and for X, we have to make a circuit, and for W, we have to make a circuit. Okay. So this is the diagram which is given. जब वो उसको कंबाइन कर लेगा तमाम सर्किट को ना एक मुकम्मल सर्किट बना दे. So this is the circuit which is made from the procedure. Okay. Okay, now we have some question and answer session. जी बेटा बताइए. If any question, if there is any question. No, sir. Okay, we will primarily doing the same, the analysis and the design procedure, but our focus will be on the design procedure. Okay, हम design procedure पे ज़्यादा focus करेंगे. Analysis procedure very easy. आपने देखा होगा कि analysis procedure is not as difficult. It is very easy. और ये सर्किट बनाना भी it's not difficult. आप अलग अलग सर्किट बना के उनको कंबाइन करके एक सर्किट में कन्वर्ट करते हैं. बिकॉज दैट स्टेप इज मिसिंग, सो यू मे फाइंड इट्स a bit confusing point in time, but hopefully after doing some more examples you will become more comfortable with this procedure of design and design of digital logic circuits. Or remember, this is the course title, digital logic design. So it is theme is to design logical circuits. ठीक है, from a problem description, जो क्या करें, जो कि एक particular problem को solve करें. Okay beta, so we end this session here. If there is any question, post your question on WhatsApp. अगर अभी पूछना चाह रहे हैं, we have few minutes left with this session. Please go ahead. जी नासिर, आपके ज़हन में कोई चीज़ है? सुमैया बेटा, आपके ज़हन में कोई चीज़ है? No, sir. तहरीम, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं बेटा? No, sir. ओके, थैंक यू वेरी मच. फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफ़िज़.